Okay, so today we are going to discuss about position, path length, and displacement. Okay, earlier you learned that the motion is a change in the position of an object with the time. Okay, in order to specify its position, we need to use a reference point and a set of axes. It is convenient to choose a rectangular coordinate system consisting of three mutually in perpendicular axes labeled x, y, and z axis. The point of intersection of these three axes is called origin and serves as a reference point. Okay, the coordinates x, y, and z of an object describe the position of an object with respect to this coordinate system. To measure time, we position clock in the system. This coordinate system along with the clock constitutes a frame of reference. Okay, एक्चुअली क्या होता है इसमें सिंपली सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चाहिए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो the coordinate system first. You have to design one coordinate system. Like this is something like coordinate system. Okay, this is your x-axis. Okay, this is your y-axis, and this is your z-axis. Okay, so point of intersection of all these three axes is your origin or a reference point. This is nothing but this called as a reference point. इसको हम reference point बोलेंगे, O को या origin बोलते हैं. और ये इसी पॉइंट के रेफरेंस के थ्रू हम किसी और ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम चेक करते हैं. लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो लाइक वी कैन राइट हियर लाइक P, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट होता है. ओके, तो सिंपली इट शोज दैट कि ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट से x एक्सिस पे कुछ x जितने डिस्टेंस पे है, y एक्सिस पे y जितने डिस्टेंस पे है, z एक्सिस पे z जितने डिस्टेंस. अगर हम इसे नंबर्स में लिखें लाइक कि 1 1 2 ऐसा कुछ हो सपोज, तो इसका मीनिंग हुआ कि रेफरेंस पॉइंट से x एक्सिस पे यहाँ से उसकी पोजीशन लेंगे, फिर y एक्सिस पे यहाँ पे लेंगे और z पे यहाँ पे लेंगे, और इन तीनों का कंबाइन पोजीशन जो बनेगा वो उसका पोजीशन होगा इन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, और हम रेफरेंस के लिए इसमें अगर टाइम भी लिख देंगे तो ये एक रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा. इट विल बिकम अ रेफरेंस फ्रेम बिकॉज पोजीशन पता है, उस पोजीशन पे कैसे मूवमेंट हो रही है वो पता करने के लिए हमें टाइम हमारे पास होना चाहिए. ओके, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द मोशन. बिकॉज अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है वो कैसे पता चलेगा? सो वी हैव टू नो द टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट कैन चेंज इट्स पोजीशन. That's why we need to know about the time. Okay, so this is something about position. To measure time, we position a clock in this system. This coordinate system along with clock constitutes a frame of reference. मतलब कि ये system with clock क्या बना देगा? एक reference frame बना देगा और frame of reference. If one or more coordinates of object change with the time, अगर with respect to time अगर उसके coordinates change हो रहे, that means the thing is in a motion, object is in a motion, or else it will be in stable situation. If it is not changing its position with respect to time, then we can't say that it is in a motion. We can only say the object is in motion only when it changes its position or it changes its coordinate with respect to time. Okay, otherwise the object is said to be rest with respect to this frame of reference. मतलब कि ये जो reference frame आप ले लो, coordinate system with the clock is called reference frame. अगर उसमें object के coordinates change नहीं हो रहे, एक coordinate change हुआ, still it is in motion. एक साथ दो change हो रहे, still it is in motion, and all three are getting changed, still it is in motion. Okay, so but अगर कोई भी coordinate change नहीं हो रहा है, that means it is in a rest. Okay, position. Clear? Choice of a set of axes in a frame of reference depends upon the situation. अब कितने axes लेने हैं, it depends completely on the situation. For example, for describe the motion in a one direction, we need only one axis.
To describe motion in a 2 or 3 dimension, we need the set of 2 or 3 axes. अगर आप सिर्फ straight ही जा रहे हो, okay, you are going in a straight way, then you don't need all 3 axes. You just need only one axis. Okay, so it's unidirectional motion or single dimensional motion, directional motion. Okay, but अगर आप 2 या 3 डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं तो फिर वो आपको वेरियस एक्सिस मिलेंगे. ओके, सो आपको 2 या 3 एक्सिस एक साथ लेनी पड़ेगी. Description of an event depends on the frame of reference chosen for the description. Okay, for example, when you say that a car is moving on the road, you are describing the car with respect to frame of reference attached to you or to the ground. मतलब जब आप ऐसा बोल रहे हो कि कोई कार मूव कर रही, ओके, तो उसके लिए रेफरेंस चीज क्या बन गई? एक तो ग्राउंड होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कार इज मूविंग. ओके, ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा ना, कार जो है वो ग्राउंड पे ही चल रही है. सो वी कैन से दैट कार इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ग्राउंड उसके लिए एक रेफरेंस फ्रेम बन गया. सिमिलरली अगर हम खुद को कंपेयर करें, तो अगर हम किसी एक पोजीशन पे स्टेबल है और कार मूव कर रही है, तो वी कैन से दैट कार इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अस, विथ रिस्पेक्ट टू मी, कि हम कहाँ पे. तो हमारे साथ जो भी रेफरेंस फ्रेम है वो अटैच हो जाएगी. वी विल बिकम अ रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट, एंड कंपेयरिंग टू अस, okay, we will check the position of a car and we will decide whether it is in motion or it is in a rest position. Okay, but with respect to frame of reference attached with the person sitting in the car is at rest. बट अगर कार में कोई पर्सन बैठा है और उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कार चेक करें, तो उसके लिए तो कार स्टेबल ही है, क्योंकि ही इज मूविंग विद द कार, he or she is moving with the car. So for him it is stable or it is in a rest. But for us, if we are outside the car and car is moving, so for us car is moving, so it is in a moving object. So this is what about the reference frame. This is something about the reference frame. Got it? To describe the motion along the straight line, we can choose an axis, say x-axis, so that it coincides with the path of the object. So we then measure the position of the object with reference to the conveniently chosen origin, say O, as shown in the figure 3.1. Position of right of O are taken as a positive and the left of O is taken as a negative. Following these conventions, the position coordinates of a point P and Q is in the figure 3.1 are 360, 260, 240 meters. Similarly, the position coordinates of a point R is minus 120. Actually, this is nothing but one line is given here. Okay, this is its reference point, and we are measuring the positions of the point Q, P, Q, and R. So we are moving only in a straight line. Okay, so we just need only one axis. We don't need all three together. Okay, because for straight line you just need one axis. Okay, so अब उसमें क्या दिया गया है कि you just need to know the position of the various objects. So we have 3 objects or 3 points P, Q, and R. अब O के बैक साइड में होंगे, उस डिस्टेंस को लोग नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, और O के फ्रंट साइड में जो है उसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं. तो पोजीशन ऑफ P इज 360 मीटर, position of a Q is 240 meter, and position of a R is minus 120 meter with respect to O. X-axis origin and positions of a car at different times. मतलब कार की अलग अलग टाइम पे पोजीशंस है, कि कार की कोई एक टाइम होगा तब 360 मीटर पे कार, दूसरे कोई टाइम पे तो 240 मीटर पे कार, और तीसरा कोई एक टाइम है तो minus 120 में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में. Now we are going to discuss about path length. Okay, so what is path length? तो path length क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते एंड पॉइंट तक का कंप्लीट डिस्टेंस. Okay, from one point to other point, distance between starting point to end point, complete distance. और जो पाथ लिया उसको भी कंसिडर करना है. Okay,
We choose a axis such that it coincides with the path of the car's motion and origin of our axis as a point where point of the car's motion and origin of our axis as a point from where the car started moving. Car was at x equals to 0 at t equals to 0. And let P, Q, and R represent the position of a car at the different instants of a time. Consider two cases of the motion. Okay. So you just need to know this statement only. This distance is called the path length. Like what distance? So आप लोग स्टार्टिंग में कहाँ थे? O पे थे. वहां से कार कहाँ पे गई है? P पे गई है. Okay. और P से होके Q पे आई है. Okay. So what is the complete distance between? What is a path length? Okay. We are going to discuss about path length. तो पहले हम कहाँ से कहाँ गए? So first of all we need to know the path. So पहले हम O पे थे. O से कहाँ पे गए? पहले P पे गए. And then from P to backward direction में आए Q पे. Okay. तो ऐसे हमने ट्रैवल किया है. So first हम ऐसे गए आगे. Then come back to here and right now we are at here. हम Q पे. So what is the distance? So distance क्या होता है? तो complete distance या path length हम बोल सकते हैं. तो path length क्या होता है? तो complete distance from O to Q by taking P in a consideration. जिस वे से गए वो पूरा कंसिडर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ से गए? O से डायरेक्टली P पे गए. तो O से P तक का डिस्टेंस कितना है? 360. Okay, this is something like 360 प्लस और P से वापस कितना है? हम 360 से 240 है. मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया? 120 मीटर. कितना हुआ ये? 120 मीटर. तो इस पाथ से you can't directly say that O to Q, O P to Q, O से P और P से Q तक आए आप. तो इस पाथ का टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ? तो इट इज लाइक 480 मीटर. कितना हुआ? 480 मीटर. मतलब आपको जितना भी ट्रैवल कर रहे हो पूरा कैलकुलेशन में लेना है. फिर वो आप फ्रंट में जाके बैक में आओगे वो भी पूरा कंसीडर करना है. अब फ्रंट में जाके बैक में आओ तो ऐसा मत सोचना कि O से Q तो पास में तो ये सिर्फ 240 लिख दे. ऐसा नहीं होगा. ओके. दिस इज योर डिस्टेंस. जब आप डिस्टेंस की बात करोगे या पाथ लेंथ की बात करोगे तो आपको कंप्लीटली ट्रैवल पाथ लेना है. कहां से कहां तक गए वो पूरा कंप्लीट मेजर करना है. ओके. यू हैव टू मेजर अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम पोजीशन वाइज पॉइंट टू पॉइंट पाथ. ओके. ऐसा नहीं कि स्टार्ट और इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही देखना है. ऐसा नहीं. You just note down each and every point and distance between that points and then directly sum all the points and you will get the answer. Got it? समझ में आया पाथ लेंथ क्या होता है? हेलो. पाथ लेंथ समझ में आया ना कि पूरा डिस्टेंस आपको लेना है. लाइक अगर इसी को मैं और आगे बढ़ा दूं कि Q से लेके मैं वापस कहां पे गया? ये Q से इसी पाथ में Q से आगे कहां गया? मैं वापस O पे आ गया. Q से कहां पे आ गया? मैं वापस O पे. तो ये कितना बचा है वापस? प्लस और कितना हो जाएगा? 240 तक थे तो 240 से 0 आए तो माइनस में मत लिखना. डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता. डिस्टेंस इज अ एक्चुअल क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज इन अ it is always a positive integer, a positive value. ओके. तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 240 वापस. तो कंप्लीट टोटल कितना हो जाएगा? 720. So this is what the distance. मतलब आप O से P पे गए, P से Q पे आए, Q से वापस O पे आए. So the distance between, or we can say path length from O to P to Q to O is 720 meter. Okay, so this is something about distance. अब दोनों चीजें एक साथ बता देता हूं मैं आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट.
सपोज कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट है, लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ये कोई लाइन है, ओके। तो ये ओरिजिन है, ओके। 0 पे ये 5, ये 10, ओके। यहाँ पे -5, यहाँ पे -10, लाइक दिस। अब आपको क्या करना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट O पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज योर P पॉइंट, दिस इज योर Q पॉइंट, and this is like R and S, और ये ओरिजिन है आपका O पॉइंट। अब किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, ही गोज टू Q, वो पहले कहाँ पे गया, Q पे, और Q से वापस कहाँ पे आया, लाइक दिस वे, P पे आ गया वापस, Q पे गया और Q से वापस P पे आ गया। सो अब दो चीजें हमें समझनी इसमें, डिस्टेंस या पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, ओके। पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज पाथ लेंथ? तो हमारा पाथ कौन सा है, तो वी आर गोइंग फ्रॉम O टू Q and return back to P, okay. So path length, so O to P के बीच का जो path length है, okay, so path length between O to P, तो कितना आएगा, पहले हम कहाँ से कहाँ गए, तो O to Q गए, तो फर्स्ट विल राइट हियर O to Q प्लस Q to P, O to Q कितना है 10, 10 प्लस 5 15, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी समझना है समझ लेना, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ लेंथ था, path length, okay. So now displacement, so just keep this in your mind that displacement deals with only a start and end position of object, किस पे डिपेंडेंसी रखता है वो, only starting and displacement। so displacement किस किस चीज पे डिपेंडेंसी रखता है, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे। तो स्टार्ट पॉइंट क्या था O, एंड पॉइंट कहाँ पे, अभी आप कहाँ पे हो, तो राइट नाउ यू आर एट P, so whatever you have taken the path, it won't cares about the path, okay, उसको पाथ से कुछ लेना देना नहीं कि किस पाथ से आप कहाँ पे गए, it just deals with the positions only, तो starting position और end position। so displacement from O to P, O से P का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, so आप कहाँ पे हो अभी, O से स्टार्ट किया था आपने, you have started from O, you have ended at P, so simply end point या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट करना, एंड माइनस स्टार्ट, सिंपली दिस इज द इक्वेशन फॉर इट। तो एंड पोजीशन क्या है, तो 5, और स्टार्ट पोजीशन क्या थी 0, तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, इट्स जस्ट 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मींस आप कितने डिस्प्लेस हुए हो, you are at here and you are now at here, you was at here and you are at here, okay, आप यहाँ पे थे अब यहाँ पे हो, okay, so you just need to deal with only positions, not with the path, what path you have chosen to come to there, okay। अब सपोज कि आप ऐसा करो कि आप O से स्टार्ट करो, Q पे जाओ, Q से P पे आओ और वापस वहां से O पे आ जाओ, लाइक सेकंड पाथ हम ऐसा ले लेते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड, और ये फर्स्ट चीज थी, अब सेकंड ऐसा लेते हैं हम लोग कि O से Q, Q से वापस O पे आ गए हम लोग, वी आर नॉट
standing at any position between them. Okay, O से Q और Q से O. So what is path length? PL. तो path length कहाँ से क्या हो जाएगी? तो O से Q गए हम और Q से वापस कहाँ पे आए? O पे आ गए. तो O से Q का डिस्टेंस कितना है? 10 और वापस Q से O का कितना है? 10. So distance is what? 20. Okay, but what about displacement? So displacement deals with only end positions. So what is its end point? O, and start point O. So displacement is 0 minus 0 0. So there is no displacement. क्योंकि हम डिस्प्लेस ही नहीं, हमने जहां से स्टार्ट किया था वहां वहीं पे हमने एंड कर दिया. So we are at the same position. Okay, now it is clear to you what is displacement and what is distance. So just keep this in mind. The path length is a scalar quantity. Scalar means it don't need the direction. You just need to calculate complete distance of every point. Okay, but the displacement is a vector quantity. That means it has magnitude as well as direction. Okay, do you know about what vector and scalars? वेक्टर और स्केलर्स के बारे में पता होगा ना आप लोगों को? यस सर. ओके, जिस क्वांटिटी को we can only represent with the magnitude, that it is called as a scalar quantity, but the quantity needs magnitude as well as direction is called vector quantity. Okay, so distance is a scalar quantity. Distance or a path length is a scalar quantity, but displacement is your vector quantity. So it needs both magnitude as well as direction. Okay, such quantities are represented by the vectors. So we will read about the vectors in the next chapter. Presently we are dealing with the motion of along with the straight line, because in this chapter we are only dealing with the straight line, so we don't need a vector quantities as well. I mean, we need a vector quantity, but we are not dealing with it. That means we are not writing any vector on it, because when you are dealing with on the straight line, you are only dealing with a single position, single direction. So vectorism can be done with the positive or negative sign only. In the one-dimensional motion, there are only two directions, backward or a forward, or upward or downward, in which object can move, and these two direction can easily be by specified with the plus or minus sign. As I told you, कि यहाँ पे सिर्फ दो ही डायरेक्शन होगी, या तो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रही या अपवर्ड डाउनवर्ड होगी. तो उसके लिए हमें वेक्टर वायर लिखने की जरूरत नहीं है. उस चीज को हम सिर्फ प्लस और माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते. अगर मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट से फॉरवर्ड में जाओगे तो प्लस लोगे डिस्टेंस, तो उसी चीज को बैकवर्ड में जाओगे तो क्या लोगे आप? माइनस लोगे. That doesn't mean it is in a minus distance, because the minus sign only shows that you are going in a backward direction, but distance तो कवर होगा ही. ओके, तो याद रखना डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. डिस्टेंस या पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है. ओके, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था वो जीरो होता डिस्प्लेसमेंट. So displacement only deals with the initial and final position only. Okay, but for distance you have to calculate every distance between each and every point, the path you have taken to travel. तो जो पाथ आपने कंप्लीटली लिया उस पाथ पर जितने सारे पॉइंट्स पोजीशंस या पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स के आपको क्या करने हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, एंड यू हैव टू सम देम, देन यू विल गेट द आंसर. ओके, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार इन अ मूविंग from O to P is like from like in this example,
So displacement of a car from O to P is nothing but 360 minus 0. So you'll get 360. Displacement has a magnitude of a 360 meter and is directed in a positive x direction as indicated by a plus sign. So here we can see here the plus sign, which shows that the distance or displacement of a car is 360 meter from its reference point and it is in a positive x direction. Okay. Similarly, displacement of a car from P to Q. So now we are at here and now we are moving at Q. So in a backward direction. So what is my starting point? 360 and end point 240. So we'll minus end point minus start point ही करना होता है हमेशा. So 240 minus 360 is equal to minus 120. That means 120 meter displaced in a backward direction. The negative sign indicates the direction of a displacement. Thus, it is not necessary to use vector notation for discussing motion of an object in a one direction. So, magnitude of a displacement may or may not be equal to the path length traversed by an object. तो ये चीज है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट, मतलब कभी कभी अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड में ही जा रहे हो, आप बैकवर्ड में कभी नहीं आ रहे हो, तो मैग्नीट्यूड और सॉरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही रहेगा हमेशा इन अ स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो. बट अगर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे हो, आप कभी फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड आ रहे हो, तो इन दैट केस आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा बट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा. ओके, so that magnitude of a displacement and a distance or path length can be or may not be equal, okay, for the object. For example, the motion of a car from O to P and path length is 360 and the displacement is also 360. In this case, the magnitude of displacement 360 is equal to the path length, but consider the motion of a car from O to P and back to Q. So in this case, the path length is 360 plus 120 is equal to 480 meter. However, the displacement 240 minus 0 is equal to 240 meter only. So we need to consider only reference point and end point. So it is only 240 meter. Thus, the magnitude of a displacement 240 meter, it is not equal to the path length. So I'm not going to deal with it more deeply. So I already teach you. So magnitude of a displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding path length is not 0. So magnitude of a displacement can be 0. अगर आप जिस पोजीशन से आप कहीं पे घूम के वापस घर पे आ गए, घर से निकले पूरा घूम के घर पे आ गए, your displacement is 0, but you have traveled the distance. तो आपका डिस्टेंस होगा, पाथ लेंथ होगी आपकी, आप कहाँ कहाँ जाके किराना दुकान पे गया, फिर बाद दूसरी कहाँ पे गया, कहीं पे गए, वापस वहां से घर पे आए. So distance, you have traveled the distance, but finally you are at home, so your displacement is 0. For example, if car starts from 0 and goes to P and returns to O, the final position coincides with the initial position and displacement becomes 0. However, the path length of a journey is O to P, P to O. Okay, OP plus PO is equal to 720. Motion of an object can be represented by the position time graph, as you have already learned about it. Such a graph is powerful tool to represent and analyze the different aspects of a motion of an object. So motion of object के लिए only numbers are not enough to understand. मतलब आपको किसी चीज का मोशन या कोई चीज समझ नहीं हो, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ नंबर्स हो, दैट इज नॉट इनफ फॉर यू. So you need to have some of the graphs, so which are very powerful tools to understand something. Okay, you can deal with more numbers in a single graph, so that you can understand so many things with the single graph only. So for motion along with the straight line, say x-axis, only x coordinate varies with the time, and we have an x of t graph. So let us first consider the simple cases in which object is stationary, are standing at the position. Now we can check the motion graph. So for it first graph, so this is graph. What do you understand from it? So you can see here
At this axis you can you have a time. Okay, this horizontal axis has a time like 10, 20, 30, 40, 50, 60 centimeter. Okay, and this axis, this vertical axis shows your distance with respect to time. ओके, सो इसके लिए अगर हम सोचे, ओके लाइक दिस, अब इसमें देख सकते हो कि वी आर एट जीरो पॉइंट, मतलब जीरो टाइम पे हम पोजीशन 40 मीटर पे थे. एट 10 सेकेंड्स वी आर स्टिल एट 40, 20 सेकेंड वी आर स्टिल एट 40, 30 सेकेंड वी आर स्टिल एट 40, 50, मतलब टाइम इज इंक्रीजिंग बट आवर पोजीशन इज स्टिल एट द सेम पॉइंट. So we are not moving, we are at a rest position. Like this, I am taking my lecture, so I am at here from last 20, 30 minutes or 40 minutes. Okay, so with respect to time I am not moving, so I am not in a motion. So similar thing, this is the graph. If I am going to draw my graph, this will look like this. Okay, so it is a graph of state, it is a graph of stationary object. अगर with respect to time position नहीं change हो रही, then you are at stationary object. Now second graph, so with respect to time, जैसे जैसे time बढ़ रहा है, your position is changing with respect to time uniformly. So this is the graph of uniform motion. So you can simply describe it like this, कि आप यहाँ पे हो, तब आपकी position यहाँ पे. Now at this time you are at here, at this time you are at here. That means your position is continuously changing with respect to time. So you are in a uniform motion. You can say that you are in a uniform motion. But about this graph, so initially at least at the up to 3 seconds you are always stable. From third second you started changing your position more slowly. So this is something like a position time graph of a car. लाइक कार के ऐसा नहीं होता कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलता हो, घर से निकले 40 किलोमीटर पर आवर से तो कहीं पे भी जाए तो 40 किलोमीटर, ऐसा नहीं होता. इनिशियली क्या होता है, कार है उसको थ्रॉटल किया आपने तो उसका इंजन स्टार्ट हुआ, फिर वो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर से, तो वो 2-3 सेकंड्स तो ले लेगा उसके लिए, या 10 सेकंड्स भी ले सकता है. उसके बाद वो चालू होगा, फिर धीरे धीरे 5-10 सेकंड में वो इंक्रीज होगा, फिर उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा और जैसे वो हाईवे पे आ जाएगा एक कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाएगा. So this is something like this graph. The first gear, second gear, third gear. जैसे like it is moving from a straight, so it will move with slow speed. अगर वो straight में से जा रही तो वो slowly जाएगी, तो its speed is lower. So it will cover less distance in that time. But as your speed increase, as you come to the highway or main road, your speed goes increasing. Suddenly अगर कुछ बीच में आ गया था, still you are going to decrease your speed. Okay, और अगर सिग्नल आ गया तो आप स्टॉप हो जाओगे, then your speed again becomes zero. फिर again you start your car and then first gear, second gear, third gear. So उसके लिए ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका, something like this. Not exactly like this, but something like this. So this is your time and position and time graph of a car. As car is moving, अगर car straight स्टेबल होती तो सिंपल स्ट्रेट लाइन आ जाता है यहाँ. तो ये x एक्सिस है, सॉरी एक्चुअली वी कैन से दिस इज x. This vertical axis have a x meter distance and then this horizontal axis has t second of time. Got it? Any doubts in this graphs? This is graph for stationary position. This is for uniform motion and this is the graph of a car, position time graph of a car or bike or something like that. Something उनके graphs like similarly बनेंगे इसके. Okay, any doubts? So let us consider the motion of a car that starts from rate as time t equals to 0 from the origin O and picks up the speed till the t equals to 10 seconds and thereafter moves with a uniform speed till the 18 seconds. Then the brakes are applied and the car stops at 20 seconds and x equals to 296 meters.
So the position time graph for this car is shown in a figure. So we shall refer to this graph for discussion. So आप देख रहे हो कि यहाँ पे 20 सेकंड तक उसका 20 सेकंड तक वो स्पीड में थी, अचानक उसने ब्रेक अप्लाई किया यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया वापस. So this shows that it is at a rest position at here. Okay, from here it is started and just moves with a uniform speed from 8 seconds to up to 18 to 20 seconds. Up to 18 seconds it is in a uniform motion, but suddenly maybe there is some object or a traffic or something like that, it stop itself. So the car driver applies the brake, and again you are finding here straight line. This shows that your car is in a straight rest position. Okay, so today we are going to stop here. So tomorrow we will discuss about average velocity and average speed. Okay, so just read these topics before come tomorrow, so you can betterly understand all these things. So this is quite simple, it's not that much harder, but it's very good to understand.